Hello and welcome to another episode of Live in Conversation with Mast Qalandar Travels. आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनका नाम है रोहित कुमार। रोहित एक बॉर्न एडवेंचरर एंड ट्रैवलर हैं, बट इसके साथ साथ एक एमबीए भी है। इनका एक सक्सेसफुल आई एम सॉरी मेरे खुद का यूट्यूब ऑन था मेरे टैब में। सो आई वाज इंट्रोड्यूसिंग रोहित टू यू ऑल। रोहित एक एडवेंचरर है, एज आई सेड। साथ में इनका एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर रह चुका है। ये एमबीए है, इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। लेकिन आखिरकार टाइम बीतते हुए इनके रियल कॉलिंग ने इनको आवाज लगाई और वो वापस उसकी तरफ खिंच गए। और कुछ सालों पहले रोहित ने अपने खुद का एक ट्रैवलिंग कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम है चेजिंग सनसेट्स। एंड तब से ये लोगों को पर्सनलाइज्ड एंड क्यूरेटेड ट्रिप्स पर लेकर जाते रहे हैं। आज हम इसी रोहित के खुद के एडवेंचर्स के बारे में और किस तरह एक क्यूरेटेड ट्रैवल क्या होता है, उसका बिजनेस कैसे होता है, उसके बारे में कुछ इंसाइट्स लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू मस्त कलंदर ट्रैवल्स। Thank you, Vidita. Thank you so much for having me, and it's always a pleasure to share your story. And I think I'm grateful that I was invited, and I get to share a lot of adventure things with people on this interview. दोस्तों, रोहित से हम बात शुरू करने के पहले मैं आप सबसे एक हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब पर प्लीज मस्त कलंदर ट्रैवल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं इसमें अपने खुद के ट्रैवल वीडियोस डालती हूँ और एवरी अदर वीक मैं रोहित की तरह किसी ना किसी इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस होल्डर को लेकर आती हूँ, चाहे वो कभी माउंटेनियर हो, बाइकर हो, ट्रैवलर हो, किसी स्पेशलाइज नीश के। तो इस तरह के लोगों को मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं इंटरव्यू करती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल to please subscribe to Mast Qalandar Travels and also subscribe to Chasing Sunsets, जो कि रोहित का खुद का यूट्यूब चैनल है उनके कंपनी का। Also you can subscribe to Banjara Riders 06 on Instagram and Chasing Sunsets 40 on Instagram, जो कि रोहित के दोनों Instagram handles हैं। So Rohit, let's begin now. Can you please tell us about your personal journey as an avid traveler? And how did your passion for travel develop? And what are some of your most memorable experiences? Hello everyone, I'm Rohit. Sorry, Rohit, there's some background noise that we are getting. Is it Are okay you now? using a mic? No, not using my. No. Okay. Then maybe I'll mute myself. Yeah. So hello everyone, I'm Rohit, born and brought up Bangalore, and I've done all my studies, entire studies in Bangalore, right from schooling to college to masters, everything. So my passion for travel is quite old, and to be frank, I started traveling quite early, and वो travel का कीड़ा बहुत बचपन में लग गया था. Would you mind using earphones, Rohit? आपका आवाज नहीं आ रहा है clearly. Do you have आवाज earphones? अच्छा, just a second. Yeah. I don't know if I'm the only one who's finding some trouble with the audio, but it's better to have it sorted.
audible now? Yeah, Rohit. So let me ask you the question again. I was asking, please tell us about your personal journey as a traveler and how did your passion develop and what are some of your memorable experiences? Sure. So, hey everyone, hello, I'm Rohit, and I started traveling quite early. And when I say quite early, I mean that my first solo travel was back when I was in fourth. It was in it was to Gokarna, I mean sorry, Goa and Mumbai. And उसके पहले I've been doing a lot of traveling with parents. So I think it came from my dad. He loves to travel, but he does a lot of temple trips. I do a lot of adventure trips, and that is when I decided to travel. And then fourth was my first travel when I was in fourth standard, and then it kept growing, growing, growing. And by the time I was in 10th, I had a bike. I explored the entire south. And by the time I finished my BCom, I had done entire India. Also, I was the youngest biker to go to Ladakh because I was around 18-year old when I did Ladakh. And so that is when I decided this is something which I love to do, and I think I should keep traveling often. But obviously, once you get into corporate life, it gets a little difficult. I started working in KPMG. That was my first corporate job, and post that, I took up MBA. I did MBA, then I worked for companies like Swiggy, Safra Hospitals, and other companies. Narayan Valia. That is where I decided that I should be, going back to travel, and I should do what I love to do. I decided to quit. I wanted to do something different. So I started with manufacturing of lights. So the company was called My Ceiling. Started in 2016. We were doing pretty well until COVID hit us. So COVID के बाद कुछ तो करना था. So a lot of friends suggested that since you've traveled so much, why not let people take people and travel along. But you had to obviously come up with a way to make sure your travel is safe, your people are safe. So gave a thought about it, worked on a few basic points, started traveling, started making people travel, and they started enjoying these trips because 2 साल घर में बैठ के सब पागल हो गए थे. तो अच्छा लगने लगा लोगों को. So the concept of self drive was very new in India. Convoy, and how to make your travel safe on road and not just your stays. Planning, a lot of things goes into when you plan an itinerary for someone. So that is why if you see our logo says curated travels. When I say curated, so we're curating the itinerary handfully. We select properties that way, which gives you an experience in itself. I mean, experience should not be only with the place; it should be with your stay, with your food. So we started chasing sunsets, and we've been able to do quite a lot of traveling now to unexplored places. So yeah, that is about chasing sunsets and my travel story. Hmm. So, Rohit, as I was asking you some memorable experiences, if you can share with us The during your most memorable, journeys. so the most memorable experience for me has been my first road trip to Ladakh because yeah, छोटी मोटी journeys तो हर कोई करता है. But this was almost like a 1 month trip from Bangalore, and zero preparations. आज की डेट में हम देखते हैं bikers को they gear up, they have a lot of riding jackets, pants, they have guards, and nice fancy helmets and gloves. हमने कुछ नहीं किया था. हम दो चार कपड़ा लिए, 5-6 टी-शर्ट लिए थे, नॉर्मल जैकेट में, विंड शीटर. We Which year just was this? This was in 2009. Back So then. yeah, and आजकल तो खैर it has become very easy for people to reach Ladakh. We had done the toughest way, which was via Rohtang Pass. So a lot of memories, a lot of learning. I remember how we had, stayed back at Rohtang at one place where we started feeling extremely cold. हम इंजन के बगल में बैठ के जैसे तैसे आग लगा के we trying to warm ourselves because हम या तो पीछे जा सकते थे या आगे जा सकते थे. पीछे जाना नहीं था because we named our trip as one way trip.
So it was a complete circuit. So we did that, and then obviously the roads, and they teach you a lot how to survive, how to talk to people, how to tackle situations. I've had a lot of learning in that trip, and that is why I think uh, today where I am is because of that trip, because it gave me a lot of experience and learnings as to how to survive, how to tackle situations, how to deal with people, with situations, etc., etc., etc. A lot of things, but yeah, since we're falling short Hmm. of time, I'll cut it down and tell that that is the most memorable trip of my life. And yeah, so that has taught me a lot of things. And how old were you back then? I was around 18, so I celebrated my 19th birthday in Leh. वाओ! काफ़ी छोटे थे आप जब आप गए, हाँ? बहुत छोटे थे. Exactly. And you shared that you've also done Kashmir to Kanyakumari rides, right? राइट सो लास्ट ईयर जब सेकंड लॉकडाउन हुआ था ड्यूरिंग मई, तो उस टाइम में एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट हमने किया था जो लद्दाख से, मतलब बेसिकली इट वाज द फास्टेस्ट के टू के. तो वी ट्राइड अटेम्प्टिंग दैट बिकॉज लॉकडाउन था, हमें लगा था रोज खाली मिलेगा. So we did try, but unfortunately, after crossing Nagpur, which is close to Hyderabad, Adilabad ke paas, we had a breakdown. So I had to call off the record. But then, yeah, अच्छा. it was an experience in itself. I mean, I was surprised that I did a non-stop drive of 37 hours and covered about three and a half thousand kilometers. So that was like over 100 kilometer an hour of You a drove day. for 37 hours non-stop, huh? Yes, that was one experience, and I think How I is would that not suggest humanly people to do possible? that. I mean, you need to eat, you need to go to the bathroom, if not Yeah, sleep. so You're completely my first, sacrificing on sleep. फिर भी कुछ तो चाहिए होता है as a तो हमने human. हमने भी ब्रेक लिया था जब हमने लद्दाख से शुरू किया था, कश्मीर से. तो वहां से हमने शुरू किया, हमने पहला ब्रेक चंडीगढ़ में लिया था, बाथरूम ब्रेक. और दूसरा बाथरूम ब्रेक नागपुर में लिया था. Hmm. और तीसरा जो ब्रेक डाउन हुआ था, दैट वाज आवर फाइनल ब्रेक. अगर वो Ah, नहीं होता तो शायद it would have been the fastest K to K. But ठीक है, I mean, ठीक है. a lot of learning again came from that. Do not attempt such things because it is our highways are not that safe, frankly speaking. So I would not suggest people to do such things Safe unless in terms you're of the road quality. uh, road quality अच्छा है, but you see a lot of cattle on the road than humans. Plus, आपका North India driving behavior is exactly opposite of how we see in South India. So you actually get confused on the highways that you're on the right road or you're on the wrong side. So that's the lot of challenge which you face when you travel. But then, Hmm. yeah, since I've been doing a lot of road trips for years, I think I have about 6 to 7 lakh kilometers of road trips. That's my Wow. driving, including bikes and cars. So I've Yeah. done a lot of trips around. But again, like I said, इतना चलाने के बाद भी लगता है कि I still have a lot to explore, Hmm. and I'm still exploring, and I'm making people explore with me. Yeah, that's great. So, what actually motivated you to, quit the safe corporate job and get into entrepreneurial, journey? Okay, so first thing was I did not like the working time. मतलब I used to work for like 12 hours a day. फैमिली के लिए टाइम नहीं है, Hmm. सैटरडेज नहीं, संडेज नहीं. फाइनेंस में था तो समवेयर इट मेड मी फील यार, जब दूसरों के लिए आई कैन डू सो मच, अपने लिए क्यों नहीं करूं. बट Hmm. अपने लिए तभी करता जब क्लियर होता कि करना क्या था मुझे. तो बाय द हाँ. टाइम आई रियलाइज कि करना क्या है, और थिंग्स लाइक दैट. It was 2016. I quit my corporate career. I started my sealing, did well, and then again chasing sunset, doing pretty well. And I'm glad that people are liking the experience what we're giving them, and that's about it. I mean, I Yeah. just want people to feel what I felt about 10 years ago when I did trips alone.
So that is what I always try to tell them, that don't join my trips if you have a budget constraint. Some trips might be budget friendly, some might not be, but it is for sure value for money. That I can guarantee you. एंड अगर आपको नहीं लगता है तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि आप अपने पैसे पूरे वापस ले लो. अच्छा, आपके साथ फ्रॉड नहीं होता ऐसा? आप ऑफर देते हैं इंडिया में? फ्रॉड तब होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रात भर एंजॉय किया, अगले दिन बोले यार रोहित भाई मजा नहीं आया. तो ऐसे में हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे. राइट, राइट, आपको एविडेंस कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, हाँ आपने मजे किए हैं। आई मीन पता चल जाता है बाय द ऑफ बिहेवियर कोर्स। ऑफ पीपल हु जॉइन आवर ट्रिप्स. वो थोड़े राइट। सेक्लूडेड है, इफ दे नॉट एबल टू मिंगल विद द ग्रुप. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट, आई डोंट नो ये हर एक ग्रुप में होता है या नहीं, बट हमारे ग्रुप में ऐसा होता है कि वी डोंट डू एन इंट्रोडक्शन राउंड अमंगस्ट द पार्टिसिपेंट्स. अच्छा। सी हम सब अडल्ट है, वी आर नॉट अ स्कूल गोइंग किड. मैं लोग को बोलता हूँ यार आपको मिंगल होना है, यू जॉइंड अ कम्युनिटी ट्रैवलिंग ग्रुप. अपने आप बात करो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मिंगल योरसेल्फ. जिसका थोड़ा सा फर्स्ट टाइम रहता है उसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, encourage करते हैं, push करते हैं, या हम उनका intro दे देते हैं. But otherwise, most of the times it hardly takes about half an hour, 45 minutes, and they all feel like, फिर उसके बाद इनका शुरू हो जाता है, अरे ऐसा लगता है जैसे हम सालों से जानते हैं एक दूसरे को. राइट। सो वैसे रोहित, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ लाइक माई बेटर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द ऑडियंसेस, what exactly is the concept of curated travels? आजकल बहुत ये कॉमन करेंसी बन गया है, तो आप बताएं कि exactly curated travels होते क्या हैं? So curated travels are, see, for an example, if you're planning a trip to Hampi, एक एग्जांपल लेते हैं हम्पी. तो हम्पी में लोग जाते हैं, पीपल यूजुअली गो टू दोज प्लेसेस जो Hmm. वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो हमने किया. और फिर वहाँ पे हमने खाना खाया कोई भी एक रेस्टोरेंट में, हम वापस अपने स्टे पे आ गए. तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा स्टे दें. उस स्टे में एक अच्छा एक्सपीरियंस कैसे देंगे? बाय ऑर्गेनाइजिंग मे बी अ डांस शो, और मे बी एक कोई सिंगिंग का रख देते हैं, जो वहाँ पे सिंगर्स आते हैं कुछ. So they play their local instruments, they sing songs, and अच्छा। that is one thing. Second thing is we try to give them, we try to take them to those places जहाँ tourist को पता नहीं चलता है. So there's a difference between a tourist and a traveler. I tell people, tourist वो होता है जिसको एक जगह जाके उसका चप्पा चप्पा उसको जानना है. ट्रैवलर वो होता है जिसको मेन मेन जगह करना है, कुछ हिडन स्पॉट्स कर लिया हमने, एंड a lot of memories collected, and we come back. सो मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको 2 दिन में पूरा हम्पी दिखा दूंगा, बिकॉज यू नीड 10 days फॉर दैट. बट 2 दिन में जितना बेस्ट मैं कर पाता हूँ उतना मैं आपको बता करवा देता हूँ. सो आर आइटनरीज आर प्लान्ड वेरी केयरफुली कि आपका ड्राइव टाइम कितना होगा, आपका पिट स्टॉप. सो a main concern when we started this thing was pit stops. Women need a pit stop because washroom use करना होता है. It's a major concern. So thankfully, I've been able to plan pit stop also, wherein there are clean washrooms. And जहाँ नहीं हो पाता है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे पेट्रोल बंक पे रुके जहाँ पे washrooms clean है. So the women have been quite happy with this part of our planning कि at least we plan our pit stop breaks. क्योंकि हम्म। बहुत से आप देखेंगे तो, एंड सिंस हम लोग का सेल्फ ड्राइव है, you drive your own car, but only thing is we अच्छा। follow a convoy. हम्म। कॉन्वॉय व्हेन आई टेल इट मींस 6-7 गाड़ियां हैं, हम सब एक साथ चल रहे हैं आगे पीछे, एंड वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कार्स सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द रोड मैप. A lot of things are there. कोई चैलेंज होता है तो हम टो कर लेते हैं. जैसे in one of my trips we had a breakdown, so I had to tow that car for almost 40-50 kilometers. Got it to a point where it could get serviced. So it's not that आपकी कार खराब हो गई तो हमने वहां पे छोड़ दिया. We try to repair. If it's something major, we'll try to get it to a nearest service station जहाँ पे कार ठीक हो सके. So lot of things are there. Challenges ऐसा नहीं कि self drive रोड पे उसमें challenges नहीं है. काफी challenges होते हैं, but we are there to solve these problems, and we try to show you some hidden places, like we plan our itineraries very carefully. So my main concern before planning any destination is the stay and the food. So these two things are what people want after the entire day you spend, exploring. You want to come back, crash on a nice bed, have nice food. So Yeah. my main focus has always been on food and stay.
Hmm. कंफर्टेबल स्टे होना चाहिए, खाना अच्छा हो, भले ही वो अ, मतलब I don't have like buffet system where you have 12 dishes on your table, but भले 5 डिश होता है लेकिन all the five are so good that you just keep on eating until your soul is satisfied. So Right. that's what I focus on, and I think that is what people have been appreciating all these Hmm. years of making them travel. So this is Right. one good thing about it. To provide such a service, obviously you need very intensive relationships with the local service providers, right? So Right, for accommodation, no, transportation, you said is self-driven, right? right, But right. the other activity organization, etc., so how do you ensure that, and like but that doesn't, and also doesn't that limit the number of places you can go to because you've only established relations with with a fixed number of service providers? So How do yeah, you? so to deal with this, what we've done is her location pe we have about 5 to 6 people whom we know who own properties. Hmm. And then we know a few people who are into conducting activities. We know them, so we know that these guys are safe. Whatever is our requirement, they meet our requirements. When I say meeting our requirements, the stay owners जो रहते हैं उनको पता है कि if there's a group coming from chasing sunset, first thing is the rooms has to be clean, tidy. The bed sheets should be clean, the linen, and जो भी आपके रूम में रहता है, everything has to be neat and clean. It Hmm. shouldn't be that you enter and then you come out and tell, अरे रोहित भाई यहाँ से बदबू आ रहा है, तकिया गंदा है. I don't want all that to happen on my trips. So I very Yeah. carefully pick up properties, choose properties, and by God's grace, I have good relationship with the hotel owners. So they Hmm. understand the kind of customers we're getting because it's not just one time for them. I tell my customers, मतलब अगर आपको कभी और अपने आप भी जाना हो तो you can always go back and you can refer our name and get a good price. So it's not Acha. that only when you travel with me you will get a good price. You travel without me, you will still get a nice, you'll get a better deal than what you would probably get if you try yourself. तो वो एक होता है uh, एक्टिविटीज में अगेन ऐसा रहता है कि वी ट्राई टू गेट द बेस्ट एक्टिविटीज डन. आई रिमेम्बर हमारे एक ट्रिप में वी आस्क्ड पीपल टू डू दे वांटेड टू डू पैराग्लाइडिंग इन मनाली. तो hmm. कुछ लोग अपने आप गए, कुछ लोग हमने बोला था जिसको करना है हमें बता देना, विल टेक यू टू द थिंग. सो Hmm. कुछ जो अपने आप गए थे दे पेड अराउंड 4,000 4,500. जो हमारे थ्रू गए थे दे पेड अराउंड 2,200. सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. आई एम नॉट Yeah. टेलिंग कि मेरे को उसमें से कमीशन नहीं मिलता है. अ लॉट ऑफ होटल ओनर्स टेल अगर आपको कुछ कमीशन चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मुझे कमीशन नहीं चाहिए. आप मेरे कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दो, अच्छा खाना खिलाओ. दैट इज इट, दैट इज what I earn out of it. So I don't want your money. I want good service. Service is what Okay. I'm looking at. So Hmm. that is how I deal with the customers and the activities. जो भी जितने भी vendors हैं हमारे. So हाँ. that's how it is. इफ यू आर हैविंग दैट अप्रोच तो वो लोग ऑब्वियसली फिर और अच्छा देंगे ही सर्विस, इफ यू आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग एनी कमीशन फ्रॉम देम. दैट्स रियली नाइस देन. Exactly. I mean, I don't want to be called as a travel agent. हाँ, ट्रैवल बाकी लोगों एजेंट. को लगता है ट्रैवल एजेंट. आई एम नॉट अ ट्रैवल एजेंट. आई क्यूरेट योर ट्रिप, सो आई एम अ ट्रिप क्यूरेटर. देयर इज अ डिफरेंस राइट. बिटवीन अ क्यूरेटर एंड एन एजेंट. तो मैं एजेंट वाला काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कमीशन नहीं ले रहा हूँ कोई भी चीज का. आई एम हाँ. टेकिंग मनी फॉर द टाइम विच आई एम गिविंग. हम्म. एंड आई थिंक वो भी आई डोंट जस्टिफाई द money that way, but ठीक है, a lot of people have told me you should probably charge a little more for your trips, हम्म. but I don't want to. क्योंकि see, I might earn money today, but I will lose out on the people part. I want to earn people than money. That'll take me long term. Wow. So I hope everyone who's listening is already looking at Chasing Sunsets website and checking out their trips and all. Our So website is do under do. construction, but it'll soon be Acha. live.
So, but do follow them on the socials like YouTube and Instagram so that you can see what is going on with Chasing Sunsets and y'all can actually go on one of these trips. But tell me one thing, you said that your trips are self-driven, right? So, how Right. do you like make these long trips, like, long distance trips, like you just mentioned Manali? So, in Yeah, those okay. So trips, how long does it distance, go? we plan it in such a way that so when I tell self drive, not necessary कि आपके पास गाड़ी होना चाहिए. आपके पास गाड़ी नहीं भी है, we try to accommodate you in one of the cars, Hmm. which we call it as carpooling, and you share the cost of fuel. So it's not Okay. like if I am taking three people, the cost of fuel will be divided amongst three. It is going to be divided amongst four. I am also Hmm. going to pay for my fuel. So Share of you. ऐसा नहीं होता है कि you don't get to travel with us if you don't own a car. You do get to travel with us. We'll make sure you get a drive. चाहे कोई भी trip हो, like when we do Himachal or when we do Ladakh, we plan our trips. Day So one you इतना live in चलाएंगे. Bangalore, but you drive all the way to Manali if the Yes, trip. yes. We Oh, drive all the way to Manali. oh, wow. How many days does a trip of that nature take? So Jana, that आना. takes about 18 days. अच्छा, तो ये तो So बहुत ही we लंबा do ट्रिप है. trips. Our trips vary from 1 day to 22 days as of now, अच्छा, wherein we do 1 day outing, we do meetups, we do overnight camping, we do overlandings, weekend trips, 5 day trips, 10 day trips, 7 days का trip करते हैं हम, 12 दिन का करते अच्छा. हैं, 18 दिन, 22 दिन, and Okay, probably okay. I will be able to do for I'm planning. So this is for those who are live with us. So I'm planning for a road trip to four nations, which is Bangkok, which is Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, very soon. So अच्छा. the dates will be announced, and अभी जो रोड खुला है उस पे. नहीं नहीं वो रोड तो अभी 24 में खुलेगा. But अच्छा, we're gonna fly from here to Bangkok. वहाँ से अच्छा. we'll have self-drive cars, and then we go around these countries. So I've been planning that. Wow, fantastic. तो बताइए, how do you go about selecting destinations and designing these travel experiences to places where even you have probably not been to, and what factors do you consider, in creating these itineraries, and how do you ensure that it aligns with your as well as your clients' preferences and interests? So one thing is when I plan destinations, I plan it according to the season. It's not that कि मैं आपको गर्मी में गोवा ले जाऊंगा या आपको बारिश के सीजन में कोई ऐसी जगह ले जाऊंगा where you cannot step out of the property. So it is Hmm. very carefully handpicked, and when it comes to destinations where I've not been to, say when Hmm. I did Bhutan in April. So Bhutan Hmm. was my first international road trip. It was not a road trip, but we flew from here to Bagdogra and then we started. अच्छा. So I was very carefully selecting properties, talking to a lot of people, taking feedbacks about how the property was, how was the food. Did a lot of study online कि कौन सी जगह जाना चाहिए. So when we came back from Bhutan, the obviously the participants were very happy, and Hmm. what made me even happier was when we met again in Bangalore after a week, and they Hmm. told कि Rohit, thank you so much for taking us because उनके I think कुछ friends गए थे with some other company, and unfortunately they spent a lot of money. I'll not tell the amount, but they spent almost three times the money what we spent, and they did not have the local food. They did not get to explore the local culture of Bhutan. बहुत कुछ Hmm. था जो हमने कवर किया उन्होंने नहीं किया. मैं Right. लोगों को वही बोलता हूँ कि सिर्फ पैसा ही सब चीज नहीं होता है. आपको उस पैसे का वैल्यू मिलना चाहिए. ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट स्टे इन गुड प्रॉपर्टीज. हमारे प्रॉपर्टीज इतने अच्छे थे कि आई थिंक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज वाज सो गुड दैट पीपल वर सरप्राइज्ड, एंड दे वर लाइक यार 4 रूम भी बुक करते तो बहुत होता. इतने बड़े रूम थे. यू कुड लिटरली हैव 10 people accommodate in one room. It was such big room. So ऐसा नहीं है कि we don't do the groundwork. हम बहुत सारा Hmm. groundwork करते हैं, and then we come up with such properties, and then जो food होता है तो बहुत कुछ है जो हम I Right. mean when it comes to working on these things, there are a lot of things which you have to tell.
but then it's not easy to explain it because we do it every day. So that's how it is. So are you working by yourself or you have a team, Rohit? As of now, I have a team. So I have my sister who's helping me with Acha. a little bit of creatives. I have a person who's helping me with itineraries. I have one more person who's helping me with marketing. So I have two more Okay. people helping me with social media marketing. So ऐसे family friends help कर रहे हैं. But obviously moving forward, I will have a team. I will have a proper setup of everything, and then I mean अभी भी है, but हाँ. road trip वाला section I take care of it alone. We do have a separate team who does the normal packages. आपका airline tickets हो गया या visa का कुछ काम है. So they take care of those things. But road trip is something which is my forte, and I majorly take part in planning the entire thing for people, right Right. from day one to the end till you come हम्म. back. तो रोहित आप जाते हैं क्या हर ट्रिप में साथ? मेजरली हर ट्रिप में जाता हूँ मैं. ओह So for me, it's वाओ. like a back-to-back trip. Whenever, like, I just finished one trip, I came back to Bangalore. So I been to Adi Kailash, which is again a very unexplored region, and not many people have been there. So I came Which back, place and did then you name right now? Sorry. Adi Kailash. Where is that? This is in Uttarakhand. This Okay. is the part of your Mansarovar Parikrama, also known as Chota Kailash. So I came back. I drove for about 8,000 kilometers, and then I came back on Thursday. I took a break on Friday. Saturday, I was again up for a road trip. अच्छा. So that's the kind of energy I have, and I think road trips are something which keeps me very active and live. Yeah. एंड आई मीन आप मेरे को बोलो अभी निकलना है रोड ट्रिप के लिए, मैं अभी रेडी हो जाऊंगा. तो आई एम दैट पर्सन हु लव्स टू ड्राइव अराउंड द नेशन. And how about your family? Like you have a wife and child, so उन देर लोग को ओके आप विद इट. कैसे टाइम देते हैं या फिर उनको भी हर जगह ले जाते हैं साथ? कभी ले जाता हूँ, कभी नहीं ले जाता हूँ, बट मेजरली ये है कि व्हेन आई एम देयर एट होम ऑन वीकडेज, सो मतलब मैं घर से ही काम करता हूँ, तो आई एम देयर स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली. Weekends I'm not here, but when I'm doing longer trips and I'm doing 18 days, 20 days हम्म. trip, obviously I do miss them, but then काम भी करना है. काम तो करना है, So they राइट. understand that thing and they're quite supportive. अच्छा, ग्रेट, दैट्स सो नाइस. सो रोहित, आपने कहा अभी एक दो बार बताया कि हाउ पीपल हु ट्रैवल विद अदर एजेंट्स दे हैव और अदर ट्रैवल providers, they have had different experiences as compared to yours, but exactly like I would like to know, अभी तो आपकी तरह और भी लोग हैं जो ये सेम चीज क्लेम करते हैं कि वो क्यूरेटेड ट्रिप्स बना रहे हैं, है ना? So, how do you ensure that you stay unique and you provide those personalized experiences for your clients, which is different from your competitors? Okay, so when I say it is different, so Hmm. we take them to the interiors of a particular place. For an example, if you're going to MP, तो हम कोशिश करते हैं to take you to the interiors of MP and make you meet the tribals, arrange Ach- something for you. So आपने देखा होगा, you find a lot of goods in market which is made by tribals, but you Hmm. are how sure are you that it is made by tribals? Just by writing you cannot tell कि हाँ it is made by them. But when we take you there, जब वो आपके सामने कुछ बना के आपको दे रहे हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा भरोसा होगा. Another thing is when you interact with them, you understand the reality of life, that how blessed you are that you get a chance to go around, meet people, because Yeah. ये लोग तो मुश्किल से इनके पास uh, I would say they do not have that enough resource to even have 3 meals a day. Forget Hmm. about the other things. तो Yeah. ये लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं पे जो रहता है, they cook, they eat. They do not travel much. They don't know outside world how it is. But when we go there, we try to talk to them. They feel nice, and they don't feel out of the place. जैसे अभी हम गए थे आदि कैलाश, so people liked us because they've not interacted ever with anyone outside their place. जो उनका गांव है, हम गांव के अंदर गए, लोगों से मिले.
लोगों को अच्छा लगा। हम्म। तो हम वही कोशिश करते हैं कि लोगों को मिलाओ, उनको जो ज़िंदगी की सच है ना, वो बताना है कि बस स्ट्रगल हर जगह है। आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो तो वो डेली लाइफ, वो ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत कुछ होता है उसमें। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। हम्म। एंड अनदर थिंग इज़, जैसा आपने बोला, जो खाना होता है, फूड इज़ समथिंग व्हिच एवरीवन वांट्स टू एक्सप्लोर। आप इंदौर या जाओगे तो आपको इंदौर का खाना खाना पसंद होगा। आप हाँ। इंदौर जाके इडली वड़ा तो नहीं खाओगे। तो वही चीज़ होता है। आई ट्राई टू टेक पीपल टू दीज़ लोकल ईटरीज़ जो क्वाइट फेमस है फॉर ओवर द इयर्स, फॉर 30-40 इयर्स या 50 हम्म। इयर्स दे हैव बीन डूइंग। अपने दादा के ज़माने से कोई पोहा बना रहा है, कोई कचौरी बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है। तो यही सब मैं लोगों को खिलाता हूँ, लोगों को अच्छा भी लगता है। खूब सो दैट रिसर्च करते हैं मतलब आप हर जगह जाने के पहले, है ना? बहुत तो हाँ, खोजबीन। तो यही करता था। जब सोलो ट्रैवल करता था तो यही सब खोज-खोज के निकालता था कि यार इंदौर जा रहे हैं तो इंदौर में मैं कहाँ पे नाश्ता कर सकता हूँ, मैं हाँ, कहाँ पे चिकन खा सकता हूँ या कहाँ हाँ। पान खा सकता हूँ। इनफैक्ट एक एक पान की दुकान से लेके एक बटर चिकन तक, जो भी आपको खाना हो तो आई कैन प्रोबब्ली टेल यू, यू नो वेयर टू गो एंड ईट, वेयर नॉट टू ईट। अच्छा। सो दैट्स द कहना है। आई मीन आजकल तो काफ़ी वो हो गया है कि तंदूरी चाय मिलती है और ये मिलता है, वो हाँ, मिलता हाँ, है। हाँ। बट आई थिंक ये सब इज़ ऑल फैंसी थिंग्स ऑफ शोइंग। अ अ, चाय जो कुल्हड़ में अच्छी लगती है वो वैसे ही अच्छी लगती है। आप कुल्हड़ को जला के उसको तंदूर चाय बोल के जो बेचते हो वो जला-जला लगता है। तो वो हुँ। मैं नहीं देता हूँ, मैं आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता हूँ। हाँ, तो यही मेरा फॉलोइंग फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर कि एज़ एन एविड ट्रैवलर योरसेल्फ जो कि आप बचपन से खूब दूर-दूर घूम रहे हैं, तब तो इंटरनेट भी उतना नहीं था और एकदम अपकमिंग था। आई मीन उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था इंटरनेट पे जितना आज की डेट में है। तो लाइक व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ओन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस डू यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इंटो द ट्रिप्स दैट यू क्यूरेट फॉर योर क्लाइंट्स? So when we plan, we do not only plan on driving on highways. We try अच्छा, to take them to the interiors, countryside roads, and then बहुत सी जगह है जो आपको गांव के अंदर अंदर दिखेंगी, जो बहुत सुंदर है, बट आपको पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि छत्तीसगढ़ में एक आइलैंड है, यू विल बी लाइक छत्तीसगढ़ में आइलैंड कैसे हो सकता है? तो हाँ। छत्तीसगढ़ में आइलैंड है, जो हमें पता है। अच्छा, तो कहाँ है? हम लोग को भी बताइए। बस बताऊँगा, आई विल वेरी सून अपलोड अ वीडियो ऑफ दैट प्लेस एज़ वेल। सो वो ठीक है, है, छत्तीसगढ़ इज़ नॉट ओनली अबाउट चित्रकूट फॉल्स। It has a राइट। lot of, when you go back to history, culture, Chhattisgarh is one place where a lot of people have spent a lot of time. When I tell people, I mean Bhagwan Sri Ram. He spent maximum time Chhattisgarh में। तो वो हुँ, है प्लस आपका उड़ीसा है। उड़ीसा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यस। Tourism is not promoting it, but we want to promote it. So Odisha is something which I would want to promote. And there are a lot of other places. मतलब even when I do these weekend trips, I take people कहीं एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे लेके जाता हूँ, कोई एक मंदिर पहाड़ के ऊपर। उनको लगता है पता नहीं कहाँ गाँव में घुसा रहा है ये। But when they go to the place, they really enjoy the nature and they feel that, हाँ ठीक है, it is worth paying him because he's got us to a place which I think you can never go by yourself or you would not try hunting it out. हुँ, तो बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है बिफोर टेकिंग पीपल। राइट। काफ़ी रिसर्च का काम है। फ्रेंड्स अभी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन एक बार कि आप लोगों को अगर रोहित से कोई सवाल पूछने हैं, तो प्लीज़ डू टाइप देम आउट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं अभी रोहित से वो फिर क्वेश्चंस आपके पूछ दूँगी। और इसके अलावा याद से आप मस्त कलंदर ट्रैवल्स को और चेजिंग सनसेट्स को यूट्यूब में प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए रोहित, अब हम लोग थोड़े से आपके फोटोग्राफ्स देखते हैं। आपने हमारे साथ कुछ शेयर किए हैं इंटरेस्टिंग, तो आप हमें बताएं वो कहाँ हैं या वहाँ उसमें क्या चल रहा है ना? श्योर, श्योर। तो एक मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन अपना। आया? Okay, so this is from the recent transformation of my car. अच्छा। I just got a overhead tent fixed.
क्योंकि हम कहीं पे भी रुक जाते हैं, कहीं पे भी सो जाते हैं। अच्छा, तो ये फिक्स करा लिया आपने? जी, जी, जी। So I have this and it takes about 5 minutes to open the entire setup. Just have to open, get inside, sleep. खत्म। अरे, तो ये आप ड्राइव करते तो ये उड़ता नहीं है? नहीं, 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 इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो दिस इज़ मोर लाइक जो आपका टीवी का बॉक्स आता है, 55 इंच का टीवी अच्छा, का बॉक्स, उतना अच्छा, ही रहता है ये। इट इज़ ओके, फिक्स्ड परमानेंटली। अच्छा। बहुत सुंदर आपका कार, बहुत सही लग रहा है, काफ़ी कूल आपने इसका किया है, बाहर से स्टिकर्स एंड ऑल पूरा बनवा के। This car is एक traveled around India and it is close to 2 lakh kilometers now. This car is फैंटास्टिक, traveling. बहुत अच्छा। ये अगेन योर कार इन सम वेरी सीनिक स्पॉट। Right. So I think this is on one of the ये शायद यहाँ पे था सरचू के पास. Sarchu is again the border of Himachal and Ladakh. So हुँ, this was on one of the hills which I had stopped and taken a photo. ओके। This was the new ये expressway, Mysore Road, जो अभी नया खुला था. ये कैसे लिया आपने? ये this I shot from Insta 360. ओके, वो क्या है? That's again a camera जो अच्छा, ये सब फैंसी शॉट्स जो आजकल चलते अच्छा, हैं. अच्छा, अच्छा, ओके। ये मैं This is इसको from my road trip to Gangtok, Natula ओ Pass. ओके। कहाँ लेटे हैं आप? ओके, ये आई थिंक हाँ, ये मैं अपने बेटे के साथ एक ट्रैक पे गया था. सो वी डिड ओवरनाइट कैंपिंग इन कनकपुरा. अ वेरी ओह! ब्यूटीफुल स्मॉल ट्रैक वेयर हम ऊपर जाके यहाँ पे चाय वगैरह बना के पिए थे. सो दैट वाज अगेन एन एक्सपीरियंस. हुँ, ये तो वी ऑल रिकॉग्नाइज़ दिस यस, स्टैच्यू। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यहाँ पे आप ड्राइव करके पहुँचे? जी, जी, बिल्कुल. अच्छा, This was on the way to Nubra Valley. ओके। No, no, sorry. This was on the way to Siachen Base Camp अच्छा, last year. Yeah. अच्छा, मतलब एकदम कोनों-कोनों तक आप जा चुके हैं। This is our hottest selling property in Kudremukh. Skybed अच्छा, है. South India's first skybed. ओके, ओके। कुद्रेमुख ये चित्र क्या सॉरी चिकमगलूर के आसपास है ना? हाँ, हाँ. हाँ, दिस वन इज़ This is Wayanad. We had been to Wayanad. One of our best properties is what I've been hearing from people. अच्छा, So this was from there. From वहाँ से था. Parking lot है ये वहाँ का. ओके, ओके। डिटेल्स लेंगे हम भी आपसे कुछ बाद में। बिल्कुल. हाँ, ये स्नो ये राइड इन हिमाचल। दिस वाज़ लास्ट ईयर जब हमने न्यू ईयर मनाली में सेलिब्रेट किया था. सो हाँ, जस्ट बिफोर वी वुड टेक अ लीव फ्रॉम मनाली, स्नोफॉल हुआ था तो हम अपना सामान बोरिया बिस्तर बाँध के निकल रहे थे उस टाइम. ओके और ये आई आपका थिंक ऑन बाइक दैट. राइड? यस, बाइक, रॉयल हुँ, एनफील्ड. बहुत डेंजरस होता है स्नो में तो। मज़ा आता है. जितना अच्छा, डेंजरस उतना एडवेंचरस. अच्छा, ये दिस इज़ रिसेंटली ओपन्ड बॉर्डर व्हिच इज़ नाडा बेट. So यहाँ पे 0 पॉइंट है. दिस इज़ द 0 पॉइंट. यू स्टेप द हाँ, अदर साइड. एक पैर आप वहाँ रखिए पाकिस्तान में, हाँ। एक पैर यहाँ रखिए आप इंडिया में. तो So ये this is the कहाँ 0. कहाँ पर है एग्ज़ैक्टली ये वाला? नाडा बेट गुजरात में है. ओके, ओके, दिस इज़ चार धाम की यात्रा लास्ट ईयर जब हमने किया था तो दिस वाज़ मना विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, व्हिच इज़ ओ नाउ चेंज्ड टू फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया. हाँ, 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 हाँ। ओके, ये मुन्नार का है. दिस रोहित अ, रोहित आई थिंक आई कांट हियर यू। हेलो? हेलो. या हाँ, रोहित, हाँ, ये कहाँ का है? ये मुन्नार का है. ओके, अरे! अरे, दैट्स मी. या दैट्स यू। ये तो हम के लोग सब पहचानते हैं। केदारनाथ. लवली। ये हर कोई पहचानता है, बच्चा-बच्चा. हाँ, हाँ।
दिस इज सियाचिन वॉर मेमोरियल। ओके। ये था सज्जनगढ़ फोर्ट, उदयपुर। अच्छा। मनाली, ये पीछे मेरे तुंगभद्रा डैम ऑन द वे टू हम्पी। अच्छा, बाप रे, गाड़ी का हालत देखो। तो दिस इज जब सरचू में रोड्स नहीं थे, तो दिस इज हाँ। समवेयर ऑन वन ऑफ द टर्न्स ऑन घाटा लूप्स। अच्छा, और आप इसी गाड़ी से जाते हैं पूरा वो, मतलब ये नहीं कि आप कोई वहां जाके बड़ा गाड़ी वो फोर नहीं बाय नहीं, फोर या कुछ लेते मैं इसी गाड़ी में दुनिया घूम रहा हूँ। मैं लोगों को वही बताता हूँ कि गाड़ी does not matter. What हैं? matters अच्छा, is your willpower and your skill. If you हैंड trust स्किल। yourself and your driving skills, you can take your car anywhere, सही, like how बहुत। I ये do. कौन सा गाड़ी है एग्जैक्टली? मारुति This सुजुकी is का Maruti A Star. ए This स्टार is, है? yeah, this is like about 10-year old now, 10, 11 अच्छा, year old. And 2 lakh किलोमीटर हो गया इसका भी. वाह। दिस इज This नोमैड्स is लैंड। on the way to Kargil. ओह। ओह। ये ये वहाँ का है, पेंच का है, पेंच नेशनल पार्क। बीच नेशनल पार्क, So हाँ। this is on the highway. ओके। शांति स्तूपा ले, somewhere on the one of the passes, I think Natula Pass. Okay, this is ये एक मंदिर है बीर बिलिंग में, मैं तो नाम नहीं अच्छा। याद आ रहा है। वहाँ अच्छा। का है ये। That's my scooty, my first long ride in scooty, कन्याकुमारी। अच्छा, ये आप वहाँ स्कूटी से धनुषकोडी चले है। गए यहाँ बैंगलोर से हाँ, कन्याकुमारी? ये धनुषकोडी है। अच्छा, ये भी सही है भाई, स्कूटी का लॉन्ग ड्राइव। 7-8 आवर्स है ना बैंगलोर से? हाँ वाह। हाँ, दिस पिक इज फ्रॉम माय फर्स्ट लद्दाख ट्रिप, सो पीछे जो आप देख रहे हैं। आई एम सॉरी, ये पूरा बिगड़ गया। एनीवे वो वही था लास्ट पिक एक्चुअली। राइट राइट। लेट मी, कोई बात नहीं, लेट मी गो ऑल द वे। हाँ। सो दिस इज योर फर्स्ट ट्रिप है ना? लॉन्ग रोड ट्रिप मतलब 1 मंथ का जो मैंने किया था उस टाइम पे। एट द एज नॉर्मल ऑफ सी 8? बाइक, नॉर्मल से जैकेट, नॉर्मल से हेलमेट। हाँ, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। बस रोज अब नॉर्मल थे। हाँ। एंड ये, इसमें आप कौन से दिस हैं? इज वाघा बॉर्डर। आई एम ऑन द फर्स्ट वन ऑन द एक्सट्रीम राइट। ओके, दिस राइट, वन। हाँ। या हाँ। ओके, ओके, ओके। जब मैं जवान था। पहचान में नहीं आ रहे एक्चुअली, अभी आपका बियर्ड वगैरह हो गया ना, राइट राइट। तो ये भी उस टाइम का एकदम पुराना। हाँ, ये भी वही ट्रिप का है। लवली, बहुत अच्छा आपका मेमोरीज है, बहुत अच्छा पिक्चर्स है। वेरी नाइस। तो एक दो Thank you. क्वेश्चंस आए ऑडियंस के, चलिए पहले वो अब देख लेते हैं। प्रीतेंद्र पवार पूछ रहे हैं कि विच आर वन और टू बेस्ट वाटरफॉल्स अराउंड बैंगलोर एंड इन साउथ इंडिया? अराउंड बैंगलोर, सी अराउंड बैंगलोर, आपको अगर रियली वाटरफॉल एंजॉय करना है, मतलब यू वांट टू हैव अ सीनिक लुक ऑफ इट, तो आप शिमोगा जाइए, स्पेशली जब मॉनसून आया हुआ है, थोड़ा बारिश और हो जाएगा तो आप शिमोगा जाइए, जोग फॉल्स। या उतना दूर आपको नहीं जाना है तो यू कैन गो टू बारह चुक्की, गगन चुक्की। दीज आर द ओनली टू गुड फॉल्स। और अगर आपको पानी में जाना है तो यू कैन गो टू कायगल फॉल्स। कायगल। कायगल, विच इज अच्छा। टुवर्ड्स नंदी हिल के आगे। मेरे हम होगे नकल फॉल्स गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, ऑर्गेनिकल भी अच्छा है, जहाँ पे इसका शूटिंग हुआ था रावण का। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। सो मेरे ये भी पास, मेरे इस पे ये भी जो वीडियो है गाना था होगे ना, दिल नकल है के छोटा सा एक्सपीरियंस। छोटी सी आशा, वो भी द होगे सेम नकल। सॉन्ग, या इट वाज शॉट देयर। ओह, इज दैट सो? मेरा वो राइट। वीडियो बन गया होगे नकल का, पहले पता होता तो वीडियो में आई वुड हैव मेंशन्ड इट। हाँ, कोई बात नहीं, प्लीज आप डू उसको चेक एक आउट और दैट वीडियो वीडियो। बनाइए, फोटो में मेंशन करिए। हाँ, राइट। सो हाउ डू वी प्लान, एक और क्वेश्चन है पवन कुमार का। हाउ डू वी प्लान फॉर मोर वीकेंड रोड ट्रिप्स, लर्न मोर कन्वे ड्राइविंग स्किल्स? So I think you can probably contact me and I can help you, and you don't need to worry. See, we don't drive on higher speeds. We don't cruise at 120, 140. हम 80, 100 में चलते हैं, जहाँ पे you have the entire control of the car, so you can stop anytime. You can do braking.
if you have to. So we also give out a lot of tips before we start our trip. So you can Hmm. follow those, tips, and not necessarily ki only if you travel with me, I'll give you tips. You can always call me and ask me for it. I will be more than happy to give you what I know. And I think even I'm on the stage of learning, and learning has no age. I'm still learning. Hmm. So, Rohit, let's move on to my questions now. So, can you, like, you described one challenging situation where a car broke down, है ना, while y'all were onward to a destination. Right, So, right. can you describe other such situations where some unexpected obstacle was faced by the group, and how did you all handle it? What was the outcome? Okay, so another challenge, what I faced last year, it was on our way back from Ladakh ka trip. So we had to go from Agra to Gwalior, but Hmm. उस time बारिश हो गई थी, and the bridge which connects that road was broken. So we had to take a diversion and we had to go via वाराणसी लखनऊ होते हुए जाना पड़ा था रायपुर होते हुए. So what happened was we were driving somewhere. हम ये एक जंगल में घुस गए थे. छत्तीसगढ़ का एक जंगल था, बिलासपुर तक जाना था. तो Hmm. वहाँ पे यूजुअली वो आर नॉट अलाउड टू गो इन द नाइट टाइम. Hmm. But since we were already there in that, we had no other option but to just drive until we reached the destination. तो Right. एंड वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको जैसे ही देयर इज इवनिंग, पोस्ट इवनिंग यू वुड नॉट फाइंड एनी ह्यूमन देयर ऑन द अच्छा. रोड. So you cannot ask, there is no network, so you can't call. एंड अगर आपने मैप पहले से लगा रखा है तो वो लोड अगर हो अच्छा. गया है तो उसी मैप के भरोसे आप जा रहे हो. या तो फिर अगर आपको वो रास्ता पता हो तो आप Hmm. अपने जो आपको जो पता है, जो नॉलेज है, उसके भरोसे आप जा रहे हो. तो हमारे साथ भी यही हुआ था. थोड़ा मुझे पता था, थोड़ा मैप को पता था, और बाकी जो मेरे साथ था उनको कुछ नहीं पता था. तो ऐसे टाइम पे आई जस्ट टोल्ड देम कि डोंट पैनिक, जस्ट कीप ड्राइविंग, मेक श्योर यू फॉलो मी. एंड हम सब एक साथ ही चल रहे थे. देयर केम अ टाइम वेयरइन वी डिडंट नो वेयर टू गो बिकॉज़ वहाँ पे Hmm. 3 अलग-अलग रोड्स थे. मैप नहीं काम कर रहा था, एंड आई वाज़ आल्सो कन्फ्यूज्ड बिकॉज़ इट वाज़ अराउंड 1 o'clock in the night, and we're not sure which road to take, whom to ask. There's no one to ask. ऐसे टाइम पे आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द कार, जस्ट वॉकड अ फ्यू स्टेप्स अहेड, और थोड़ा सा अपना कुछ ऐसा कैलकुलेशन नॉलेज जो था उससे मैंने आई आई चोज अ रोड. वी रीच्ड बिलासपुर विद इन नेक्स्ट 2 hours. Oh So God. so when I reached Bilaspur, one of my relative called. He works in Coal India. So he Hmm. called. He asked me कि रोहित कहाँ पहुँचे? I like बिलासपुर पहुँच गए. लाइक चलो अच्छा है पहुंच गए. तो ही बिफोर आई एंटर्ड दैट फॉरेस्ट, he had Hmm. told me that make sure you cross the forest as soon as possible. But obviously when you are traveling with people, उनको ये नहीं पता रहता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है. They randomly take breaks, and then that leads to a delay in travel. हाँ. So that is what happened, and then we somehow, matlab, I did not tell them how dangerous it was because I didn't want them to panic. So I dealt with this situation that way, and I by not telling them, and came out of it when we reached Bilaspur. होटल में चेक इन किया. अगले दिन मैंने उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन था जिसमें हम कल थे. आपको Hmm. नहीं पता था. यू आर एंजॉयिंग द म्यूजिक इनसाइड द कार, बट आई वाज नॉट. आई वाज having that responsibility of Yeah, getting you out you're of that place. responsible for everyone, है ना? Hmm. Exactly. So that was one situation. Another situation was when we were एक और गई लद्दाख का ट्रिप था. Hmm. हम जा रहे थे श्रीनगर से अमृतसर. तो वी वर 3-4 कार्स. जो पठानकोट के बाद थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है रास्ता बिकॉज नॉट बिकॉज इट्स हॉन्टेड बट बिकॉज वहाँ पे चोरी बहुत होती है. Hmm. So it was my car, and then we had another car. We had an understanding, not that we spoke on call. We just had an eye contact, and हमने decide किया कि every half an hour he takes lead, and then again after a half an hour I take the lead. He'll be the tail. So ऐसे करते करते we kept the entire convoy engaged. We reached Amritsar, and then everything is fine.
सो वो भी एक सिचुएशन था, तो ऐसे काफी सिचुएशंस आते रहते हैं। आते रहते व्हेन यू आर ऑन द रोड, है ना, कुछ ना कुछ राइट, चैलेंजेस। राइट। सही है। देर आर अ कपल ऑफ मोर questions that we've got. One person, Behrupia, is asking, how can we connect with you for travel plans in coming months? Also, can you help us with planning for longer trips in well in advance? Do you announce your long trips 3-4 months in advance? Okay, so you can connect with me on WhatsApp, on Instagram, or you can also connect with us on Facebook, जो आपको convenient लगे। हाँ, And चेजिंग हमारे सनसेट ट्रिप, का मैंने एक काम करेंगे रोहित, आफ्टर दिस कॉन्वर्जेशन आप, है ना, जो कमेंट रहता है वीडियो के नीचे, उसमें अपना सब कॉन्टैक्ट लिंक्स जरूर दे दीजिएगा, बिकॉज इट विल बी sure, sure, हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। right, right. So yeah, जितना we भी do बस plan it in क्वेश्चन है और advance. प्लस कॉन्टैक्ट वो है। We plan our trips 3 months in advance. So, अच्छा। like if it's June right now, so our July, August, and September trips are already planned. And जो हमारे ग्रुप्स है उसमें हम अनाउंस कर देते हैं, कुछ कुछ हम सोशल मीडिया पे भी अनाउंस करते हैं, बट या इट इज ऑल प्लान्ड। एंड कमिंग टू हेल्पिंग पीपल इन प्लानिंग देयर ट्रिप्स, यस वी डू हेल्प पीपल विद प्लानिंग देयर ट्रिप्स, चाहे वो रोड मैप हो या फिर होटल्स हो या फिर परमिट्स हो फॉर दैट मैटर। सो वी डू हेल्प पीपल विद ऑल ऑफ इट। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली मेरे साथ चलोगे तभी मैं करूँगा, नहीं, आप हमेशा कॉन्टैक्ट करिए, आपको कहीं भी जाना है। ट्राई टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस वी कैन। Great. So we will mention all his contact details underneath the video once this conversation ends. So you all can contact Rohit through any of the means that are convenient for you. So Rohit, in an industry that is constantly evolving, how do you stay up to date with the latest travel trends, emerging destinations, and customer preferences? So most of the times I travel to the place. Before I take people, अच्छा। I go there myself, if हम्म। possible. और बहुत दूर का होता है तो मैं नहीं करता हूँ। What I do is then I activate my sleeping cells, so which are also called as humans. तो वो terrorist वाले sleeping cell नहीं। So I have a lot of friends around India, so I हाँ। asked them about it. So I asked them to go and visit the place. तो मैं उनको काफ़ी कुछ बताता हूँ, तो कभी-कभी वो भी इरिटेट हो जाते हैं कि यार एक काम कर, तू ही आके देख ले। But then yeah, I want to be 100% sure कि when I take people there, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट। जगह को लेके या स्टे को लेके या खाने को लेके। तो यही सब चीज़ें हैं व्हिच हेल्प्स मी प्लान थिंग्स। बाकी तो अपना रिसर्च ऑनलाइन चलता रहता है, तो क्या वो सब ट्रेंड है। कर रहा है, क्या नहीं, वो सब सब तो ऑनलाइन राइट, राइट। पता चलता रहता है। एंड ये बताइए कि हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय चेजिंग सनसेट्स? लाइक व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? डू यू हैव इन प्लेस एनी सच थिंग? हाउ डू यू असेस कस्टमर satisfaction सो and continuously your सो services? कस्टमर, व्हेन यू टॉक अबाउट कस्टमर सैटिस्फैक्शन, सी सर्विस इंडस्ट्री में आप 100% कभी नहीं दे पाते हो। आप आपको लगेगा आपने 100% दिया है, बट हो सकता है सामने वाले को लगे कि आपने खाली अपना 50% या 80% ही दिया है। सो देयर इज नो वे यू कैन मेजर। The only Hmm. thing I think you can feel good is when you come back from a trip, and जो हमारे ट्रिप्स होते हैं एक अलग ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे। जब उस ग्रुप में दे स्टार्ट टेलिंग कि आई फील लाइक आई शुड प्रॉब्ली गो बैक टू द सेम प्लेस, और मे बी आई शुड जस्ट आई एम मिसिंग दोज मोमेंट्स और द प्लेसेस और द टाइम स्पेंड, चाहे वो बॉनफायर हो, चाहे वो डांस हुआ हो, या चाहे वो एक फोटो सेशन ही क्यों ना हो ऑन अ हिल टॉप। So when they Yeah. come back, they write on the group, I'm already missing all of you, are missing your company. So I think that itself is an appreciation for me, that I've been able to give them enough memory to take back home. If Yeah. nothing, at least the memory. So that is how I think you can You measure assess happiness. your. Yeah. Hmm. बाकी तो जितना लोगों को मजा आए उतना अच्छा है। राइट। तो आपने जो बोला कि आप वो मनी बैक गारंटी देते हैं, तो आज तक किसी ने क्लेम किया है आपसे? अभी तक कोई नहीं किया है, क्योंकि जितनों ने भी बोला है कि इट इज आवर फर्स्ट टाइम, दे हैव हाँ। कम विद अस, एंड दे हैव गिवन मी एन एडवाइस
रोहित भाई थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर लो, बिकॉज अच्छा। क्वालिटी बहुत अच्छा है या खाना बहुत वाओ। अच्छा है। वाओ। यहाँ पे अभी पूछ रहे और हमारे एक ऑडियंस जिनका नाम है एयर एयर कि हाउ टू मैनेज हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेवल्स, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर सजेस्टेड, व्हाट टू डू इफ आई हैव अ सेडान कार विथ लेस ग्राउंड क्लियरेंस। एक्चुअली शायद आप अभी थोड़ा लेट आए, अभी हमने स्लाइड शो में दिखाया था कि रोहित का खुद का व्हीकल इज अ स्मॉल हैचबैक एंड इट्स ऑल सो आई थिंक हाई अबाउट। एल्टीट्यूड सिकनेस इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका हाँ। माइंडसेट एक मैटर करता है कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। अगर हम्म। आपका माइंडसेट ये है कि नहीं यार वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होगा, ऑक्सीजन इश्यू होगा, हम्म। नहीं, आप मत सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में। जस्ट थिंक दैट यू आर गोइंग टू अ प्लेस टू एक्सप्लोर, टू एन्जॉय। एंड अगर राइट। होता भी है, सो देयर आर डिफरेंट मेडिसिन, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर डॉक्टर। एंड जैसे हम यूजुअली देते हैं डायमॉक्स 1 day बिफोर वी रीच लद्दाख। सो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम मनाली, हम एक दिन पहले डायमॉक्स दे देते हैं टू दी ओल्डर पीपल। ऑब्वियसली जो यंग क्राउड है उनको जब नहीं देते, हम उनको बोलते हैं यार अपना मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनो, बिकॉज यू आर हम्म। ट्रैवलिंग ऑन रोड। व्हेन इट कम्स टू कार, आई थिंक सेडान लेके भी आई हैव डन लद्दाख इन सेडान इज वेल। हम्म। वरना से कम ग्राउंड क्लियरेंस किसी का नहीं होगा। तो मैं वरना लेके जा सकता हूँ, तो आई आई डोंट थिंक आपके पास उससे लो कोई होगा, अनलेस यू हैव अ सिविक और लंबोर्गिनी और फरारी। हाँ, तो that answer is given. Any details about your upcoming future trip plans? What about international road trips? So, again, earlier in this interview, Rohit had mentioned that they are planning. So, Rohit, आप ही एक बार फिर से बता दीजिए. Okay, so yeah, we are planning a lot of international trips and across India. So we have been doing. So I would tell people that before joining cross country trips, I would always tell people कि you first experience our weekend trips, because you will get a hand on how we operate. हम Yeah. हर एक आई थिंक हर एक ट्रैवल जो करवाते हैं उनका एक तरीका होता है करवाने का। सो आप आइए, आप देखिए हाउ वी ऑपरेट, हाउ आवर प्रॉपर्टीज आर। आपको समझ में आता है, देन वी विल टेल यू मोर अबाउट आवर ट्रिप्स टू नॉर्थ इंडिया या मे बी इंटरनेशनल। International, we do have plans of doing a lot of countries, but there are challenges in that as well. So we're Hmm. trying to overcome those challenges. But yes, we do have plans of doing a lot of road trips abroad. So you'll just have to wait for some time, and then yeah, you will get that feel. And I'm not telling I'm competing with Adventures Overland, but I'm making my own niche of Yeah. travel thing. Yeah. So, for more details, also, I would suggest that you all please follow Chasing Sunsets on the socials, and you'll probably be aware of the announcements that are made there. So, Rohit, a second last question is looking into the future. What, and that's also one of our audience questions. So, what are your aspirations for your company? What do you how do you plan to expand or evolve your offerings while maintaining the essence of curated travel? So we have a lot of plans, I mean, see, getting to the top is difficult, but then I think sustainability at that point is much more difficult. So we do have a lot of plans as to how to reach the top and then how to sustain in future. So plans hai, but I do not want to reveal those plans here on this digital platform, because जिसके पास पैसा है वो कॉपी कर लेगा, जिसके हाँ, पास बिल्कुल, बहुत इजीली, हाँ। मतलब आप आइडिया कॉपी कर सकते हो, लेकिन जो थॉट प्रोसेस बिहाइंड द आइडिया है उसको आप नहीं कर पाओगे। बट देन Hmm. आई डोंट वांट टू गिव अ चांस टू पीपल टू कॉपी सच थिंग्स। So Sure, yeah, sure. there are a lot of things which we'll be planning for people in future. So I would just request people कि you come, you join our trips, चाहे वो ओवरनाइट कैंपिंग ही क्यों ना हो। आप आइए, आपको समझ में आएगा कि कैसा लोकेशन होता है, हाँ। कैसा अरेंजमेंट होता है, and how we plan it out. And then you can take a call that, should you go with us or should you not go with us. Hmm. Also, Abhay Kuruvilla is saying, how can we get updates on any events or trips? I think it's best if you contact Rohit on WhatsApp, and then he'll
probably add you to a group, and then you can get updates there. Uh, Right. Yeah. right? And Yeah. there's Daksh DP who's asking, on your longer journeys by road, are the kids safe? So we have taken a lot of kids. Last year we had about 10 kids and 40, 45 adults on our trip. So, and our crowd is family friendly. We have a lot of couples, families who come on our trips. So वो जो छपरी टाइप crowd है वो नहीं आता है हमारे में, क्योंकि I don't want people to come drink and create a mess around the place. So Yes. we have a lot of families and couples who come. A lot of solo women travelers come on our trips. So Hmm. up, if you can go back and look at our Instagram, Facebook page, you will Yeah. see our photos. You will see a lot of kids. So we have taken a kid of 2 year up to the person of say 65, 60, 75. In fact, I remember Wow. Mr. Rao and his wife. They're Hmm. uh, they're a couple who are about 75 years. They did a road trip with us to Dandeli. So it's not that, age is not something which matters. What matters is how comfortable you feel with the crowd. I Right. remember them being the most happiest couple in the crowd. That time Hmm. also we were about 52 people in Dandeli. Okay, okay. So last question, Rohit. Although this Yeah. is a very interesting question, session. This has been a great and interesting session, but we have to end it somewhere. And I would just like to, for the favor of the audience and for me as well, like, what is the advice that you would like to give to someone who aspires to start their own travel company and specialize in something like this, as See, someone who has if you experience? want to start your own travel company, don't start with the aim of कि आपको पैसा कमाने मिल जाएगा, आपको घूमने मिलेगा. See, there are two things. अकेले घूमना और लोगों को घुमाने में बहुत फर्क होता है. आप जब Hmm. अकेले घूमते हो, you might adapt to any kind of situation. But when you are taking people, you cannot compromise on anything because they have paid you for it. ना तो you cannot compromise on any such thing, be it quality or be it even if you're changing the minus detail in the itinerary, you have to make sure you keep them informed that so and so thing has been changed in the trip. So Hmm. if you are planning to start something on your own, make sure पहले आप उतना travel किए हो. Right. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं मैसूर तक नहीं गया हूँ लेकिन मैंने ट्रैवल कंपनी खोल के बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को भेजूंगा. नहीं, दैट डज नॉट हैपन, क्योंकि पैकेज स्टोर करने वाले बहुत है मार्केट में, बट पर्सनलाइज स्टोर करने वाले बहुत कम हैं. एंड पर्सनलाइज व्हेन आई से it does not mean that I'm just making the itinerary for you. I am myself coming with you. Yeah. I am personally giving you that experience and what I had in the past, and I am personally taking care of you and the entire group in the entire trip. So that's how it is. So see, it's not an easy thing to do, but if you do plan to do it, then make sure you work on such basic things. I would say, stick to the ground, stick to the basics, and you would do well. Right, right. Just one more question somebody has asked. What are my options if I don't want to get my vehicle on road trips? So Rohit has already mentioned that in case you Carpooling, don't want to get, yeah, somebody will drive you. There will be an option for you. right? Right. So, Rohit, with this, we come to an end of this really interesting and highly informative discussion. Thank you so much for your time once again. Thanks to a very, very alive audience. The questions that y'all have brought up, they are very valid, they are very pertinent, and they added to the discussion. So, really, thanks for sticking around for this entire conversation, and we'll meet again next week, hopefully. Bye bye. Thank you so much. See you all. Bye. Bye.